So this is the second Q&A that we are going to have for the February 2025 batch. As we can see, this is houseful. This Zoom show is houseful, and YouTube also is running very well. It is 1,000+ candidates have joined there as well. Okay, so it's a good turnout. You can ask your friends who have not joined and send the YouTube link so that they can join. Make sure you're not getting out of the session, but once you get out, it will be difficult for you to enter back because we have already reached the full house here now. 500 is the capacity that we have reached. Okay, go to the next slide, please. So C-DAC, all of you know what is C-DAC. C-DAC के बारे में बताता हूँ. C-DAC is a central government organization under the Ministry of Electronics and IT, set up in 1988, that is 37 years ago. So we have 12 centers across India. We started the center in Noida. Now what you see is that Mumbai. And now from the central imagery, what you are seeing is Patna, and go to Guwahati center in the northeast, and Silchar and Guwahati together, and then you have down there Kolkata center. See the buildings of C-DAC centers here in one shot. You can see that also. Then you have Hyderabad. Hyderabad, you see is Chennai, C-DAC Chennai, and Thiruvananthapuram. This is the Technopark Thiruvananthapuram. You also have Kochi there, center, and this is the Bangalore center. Then we have C-DAC Mumbai has 2 centers, Margaret Center. So these are the 12 centers that we have spread across the country, like from north se leke south tak, east se leke west tak, we have C-DAC centers are there. Apart from these 12 C-DAC centers, we have 20+ authorized training centers of C-DAC that are running in Pune, Mumbai, Karad, Jaipur, and Indore. Most of the places it is there. The details are given in the admission booklet. So these centers, authorized training centers, are also they are running the same courses and the similar. All these things are taken. The quality is maintained as it is run for C-DAC centers. It is run in the authorized training centers also. So there is no difference between a C-DAC center or an authorized training center. All are C-DAC training centers only. So you can go and take in any of the training centers where we are offering admissions. Okay, whether it is C-DAC or authorized training center, don't worry about it. Everything is very good. Move on to the next slide. Yeah, so these are the major focus areas of C-DAC. As I said, C-DAC was established in 1988, 37 years ago, by the government of India. And then since we started with the high performance computing, Param supercomputers and all, then we moved on to the various other technological fields in IT fields. That is what's shown over here: multilingual computing, electronics part, health informatics, software technology, cyber security, quantum computing, and education and training. Education and training is where we are working. The authorized training, the advanced computing training schools are there, the training centers are there. That comes under the education and training. So we'll talk more about the courses now. Can you please move to the next slide? Yeah, so I'll directly come to the PG Diploma courses of February 2025 batch. This I have covered in the first part of the Q&A also, but for those who have come new, this will be helpful. I'll just quickly cover this. Our courses are 900 hours courses, 24 weeks programs. Okay, 24 weeks programs starting on the 25th of February and ending on 11th of August. Starts on that day and ends on 11th August. There is no delay in starting as well as in ending of the course. This is exactly 24 weeks we'll be completing the course. So 24 weeks में क्या क्या चलता है? Course delivery मतलब lectures चलता है, labs चलता है, exams चलता है, module exams चलता है, lab exams चलता है, and also the final exams, aptitude, communication, your project, your placement entry, every placement system entry, everything happens in those 24 weeks, including your result publication.
तो yes, 24 weeks में सारे चीज about the course will be over. By 11th August, will be ready with the course completion and ready for the placements, which will be starting within the next 10 days on 11th August, 21st August 2025. These are full-time courses. The duration of the course is actually 24 weeks and 900 hours, but almost content of the course is such that students have to spend around, though it is written 6 to 8 hours per day, theory and lab sessions, 6 days a week, but you need to spend around 10 to 12 hours every day for successfully completing this course. 900 hours का contact hours है, उसके अलावा 300 hours minimum we ask for self studies and preparations and assignments and things like that. So it runs for around 1,200. It's almost equivalent to 1 year of an engineering college session we are completing in 24 weeks. That is actually 5.5 months. Okay. So the why I'm telling this 10 to 12 hours here is that एक कोर्स में अगर ज्वाइन करने का, तो आपको जो आपने अगर बाकी जो चीजें कर रहे हैं, जॉब या अदर कोर्सेस, बाकी सारे चीज छोड़ना पड़ेगा इसमें, बिकॉज यू नीड टू हैव फुल डेडिकेशन एंड एफर्ट इन डूइंग दिस पर्टिकुलर कोर्स. अदरवाइज कोर्स कंप्लीट तो शायद कर सकता है, लेकिन सक्सेसफुली कंप्लीटिंग, सक्सेसफुल मतलब क्या है, कोर्स completed with a good placement नहीं हो सकता है if you do not put 10 to 12 hours each day for this particular course. So this is a very important course where your more than 100% dedication is required. Okay. So course के बाद courses will be running around 8 to 10 modules will be there in every course, like whether it is PG-DAC, big data, or any embedded system or anywhere, you will be having around 8 technical modules as well as communication module, aptitude module, and project module. Or on an average, you have 10 modules in that. तो हर एक मॉड्यूल चलेगा, उसके बाद मॉड्यूल का एग्जाम चलेगा, लैब एग्जाम चलेगा. ठीक है, मॉड्यूल का इंटरनल असेसमेंट एंड लैब एग्जाम चलेगा. दैट विल बी डन एट द सेंटर इटसेल्फ, एंड और those who are attending online courses, it will be done in the online mode. Okay, so after that you will be having the centralized course and exams. That is, after all the technical modules are delivered, these exams are done centralized. Matlab, across India, this exam will be done at the same time for all the centers. This exam will be done. This will be done in somewhere in the month of July 2025 में ये exam होगा. For that, if you are doing a physical course, the exam will be done at your own center. If you are doing an online course, you can go to the nearest center where the exam is offered, like the way you have done for your C-CAT के लिए. इसके बारे में आपको क्वेश्चन है तो बाद में भी पूछ सकता है. ठीक है, तो ये फाइनल एग्जाम के बाद हम लोग मोस्टली प्रोजेक्ट वर्क करते हैं. 2-3 हफ्ते का प्रोजेक्ट रहेगा, फाइनल प्रोजेक्ट रहेगा. उसके बाद कोर्स कंप्लीट होगा 11th अगस्त को, जैसा लिखा है. Then we will be starting the common campus placements. Common campus placements के बारे में एक स्लाइड है, मैं इसमें बात करता हूँ. That will be done. Okay, move to the next slide. So we have what is the speciality of C-DAC courses? Why it is so special? Why we have been, as I said, we have started the courses in 1993. 32 years हो गया इसमें, and through C-CAT we are doing this admissions. This is your 26th batch. We are having the admissions through the C-CAT itself, the similar mode of admissions. So since then we have been running it so successfully. What is the speciality of it? It is first thing is that the range of courses. We have 14 different courses are there. If you have interest in something like, especially if you have interest in blockchain, if you have interest in cyber security or artificial intelligence, robotics, we have courses in all these things. Or you want to go into the general programming, you have the DAC program. All different disciplines and specializations, we have courses. That's the first specialty. And then our focus is more on the hands-on training. Hands-on training we give that there is focus on first we'll teach the theory part, basics, and go to the advanced part, and then along with that
They're like almost like, half or two-third of the course is on the training, practical training, the labs and the assignments and things like that. And then we have application-based learning because you're going to work in the industry. तो इंडस्ट्री में कैसे एप्लीकेशन चलेगा, क्या सीखा है वो कैसे अप्लाई करेगा इंडस्ट्री में, that we'll be giving the focus on. So this is our main focus, and then towards the end of it, we'll be working towards your placements. Most of you are coming here for campus placement, so that is one of our focus areas. Move to the next one. Yeah, so as I said, we have 14 courses. 14 courses है इसमें. Again, you can see the details of these courses in the admission booklet. C-DAC का वेबसाइट में सारे जगह पे ये information दिया है. You can go through that. C-DAC.in or ax.cdac.in में you can go there and see that. Click on that particular course link. You will get the details about it. So we have 14 courses. Out of that, 12 courses are falling under the category of category 2. Category 2 is something where you would have given the exam in sections A and B. सब लोगों ने दिया होगा sections A and B. A भी दिया होगा सबने, B भी दिया होगा. So all of you will be eligible for this 12 courses depending on your basic qualification degree. उसके हिसाब से you will be eligible for these 12 courses that are running under the category 2. And जो उसमें जो orange color में जो दिया 2 courses है, embedded systems and VLSI. These are the 2 courses particularly for the CSIT electronics students. These are for this you need section C का भी exam. That means you should have a rank in category 3. Like all these together, we have the 14 courses. We have started the advanced training schools with the course PG-DAC program. PG-DAC was the first one, and that is our flagship program. Most of the two-thirds of the students do that particular course, and it is available almost across all C-DAC centers and authorized training centers. Next slide, please. Yeah, so as I said, where do we get this information about all courses? तो आपको जैसा है कि आपका जो सी कैट रैंक अनाउंस होने के बाद मेरे से एक मेल आया होगा आपको, उसमें आई हैव गिवन 3 एडवाइसेस व्हाट इज टू बी फॉलोड. पहले एडवाइस है आपको देखने का है कि व्हाट इज दैट कोर्स दैट यू आर लुकिंग फॉर. आपका स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट यू वांट टू डू. पहले आपका स्ट्रेंथ देख लीजिए, आप किस में जाना चाहते हैं. यू वांट टू गो टू बिग डाटा, और you want to go to IoT, or you want to go to something like cyber security, or whatever is there. You decide that first by doing a proper R&D on the internet or visiting the C-DAC centers. उसके बाद आप डिसाइड करें हाँ मुझे ये कोर्स करना है. That is important thing. Then you have to check for that which center is like you want to take it up, and this courses according to your eligibility, the academic qualifications, what are you eligible for, these you have to see, and then you have to give the preferences. So ये सारे चीज का कोर्स का details are available on C-DAC's website. Go to each course like it is written here, PG Diploma in Advanced Computing. उसमें अगर गया तो इसमें एक तो है कि you can get the course flyer, that is the brochure that is seen over here. वो blue color का जो brochure है वो दिखाई देगा. You click on the left side, there are many buttons. If you click on that, each and every course का details लिखा है, module लिखा है, module के अंदर क्या क्या पढ़ा रहा है, everything is written over there. Make sure you visit all these things. That's very important thing. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया और मुझे उसके बारे में पता नहीं है. मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया बिकॉज समवन एल्स टोल्ड मी. दैट शुड नॉट बी द थिंग. यू शुड डू ए प्रॉपर रिसर्च ऑन दैट. तो आपको ये सारा इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगा. एंड ऑल्सो यू विल गेट दिस एंटायर एडमिशन बुकलेट. एडमिशन एक बुकलेट करके 40 पेज का एक बुकलेट है. इसमें सारे डिटेल्स लिखा है जो मैं दिखा रहा है. That also you can download from our website. Keep that is the record for you to see what are the processes. Each day में क्या होता है, process में क्या चलता है, what are the important dates. Everything is mentioned in that admission booklet. Next slide, please. Once this is February 2025 batch, I strongly suggest that you should not miss the catch and take admission in this particular batch. I will tell why we should take admission in this particular batch. It is very, very important thing. I will talk about that later. You have questions, you can also ask. Next slide, please. So, पहले चीज है आपका eligibility criteria. Eligibility criteria, most of you have given the eligibility, all of you have given the eligibility while applying for C-CAT itself. उसके हिसाब से आपने जो दिया है
दो चीजें उसमें है, आपका स्ट्रीम है, इंजीनियरिंग है, उसमें क्या ब्रांच है, और एमसीए एमएससी जो भी है उसका ब्रांच है, वो दैट इज इम्पोर्टेंट। उसमें दूसरा चीज इम्पोर्टेंट है कितना परसेंटेज है। ये दो चीज के हिसाब से आपको फर्दर चॉइस फिलिंग कर सकता है उसमें। ओके, सो इफ यू आर, कॉमन एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है? इफ यू आर फ्रॉम एन इंजीनियरिंग ब्रांच, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये पांच छह डिसिप्लिन से है, तो यू आर एलिजिबल फॉर ऑल द कोर्सेज प्रोवाइडेड यू हैव 50%। 50% वाला कोर्स के लिए 55 भी है, 55 के लिए 60% कुछ कोर्स के लिए ऐसा है, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल दिस कोर्सेज। एमएससी इन कंप्यूटर साइंस and IT and electronics are also eligible for all the courses, all the 14 course के लिए eligible है। Now suppose you have given your exam, university exam, and you are awaiting for the results। समझिए you had backlog KT or something is there, and you have given the exam and you are waiting for the results, then also you can take admission in C-DAC. If you have appeared for all the exams, you can take admission in C-DAC, and you need to, you can show the mark sheet till now, अब तक का जो mark sheet दिखा के admission ले सकता है, but make sure you have to show your certificate by 30th जून 2025। एग्जाम, फाइनल एग्जाम के पहले 30th जून को आपको ये सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, टू मेक श्योर दैट you have cleared the course with the discipline and the branch as well as the percentage that is required। ये common eligibility है। On to the next one, you have apart from this common eligibility, इसके अलावा, common eligibility के अलावा, in addition, हाँ, ओके, कॉमन एलिजिबिलिटी में सब लोग एलिजिबल है, इसके अलावा आप किस किस फॉर सर्टेन कोर्सेस, some other disciplines, some other courses are also eligible। जैसा है कि पीजी डैक लेते हैं, पीजी डीबीडीए लेते हैं, एआई, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी एंड दी ड्रोन वाला कोर्स, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम वाला कोर्स है। ये जो 6 कोर्सेस है उसमें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन of engineering is eligible। If you are from civil engineering, if you are from food technology, or if you are from mechanical or anywhere, you are eligible for these courses। Okay, so remember, if you are from, particularly we have students from mechanical engineering and civil engineering and other disciplines, non core fields, जो core field में नहीं है, उन लोगों के लिए ये 6 कोर्स ही eligible है। Okay, so that's very important thing। So you if you are MCA MCM also you can join this। MSc फिजिक्स ज्वाइन कर सकता है, मैथ्स ज्वाइन कर सकता है, स्टैटिस्टिक्स भी ज्वाइन कर सकता है ये कोर्स के लिए। If with these disciplines, we, whether it is mechanical, civil, you can very well do these courses। That's why we have made you eligible for this course। इसमें मैंने जो देखा है, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसा मैंने बोला है, this is we have completed 25 years। I personally associated with 25 batches of the courses, and I have seen that many of the mechanical students, civil students, everybody who did not have a lot of programming experience, or they are actually new to the programming, they have done our courses and they have really excelled and has got very good packages provided they have studied really well during the 6 months program without any other commitments, only focus towards the course and getting placements। So if you are eligible for the course, don't worry about it, the course is designed for you। And for some courses like DMC, DICTIS and HPCSA, your MSc in mathematics and statistics are also eligible। MCA is also eligible। IoT DASST course के लिए MCA is also eligible। DRAT के लिए, that is the robotics technology, उसके लिए graduate in mechanical and mechatronics are also eligible। You can take screenshots of all these presentation। आपको जैसा है कि क्विक रेफरेंस के लिए सारे जो स्क्रीनशॉट में जो स्लाइड्स में दिखा रहा है, सारे इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है एंड कीप इट हैंडी फॉर योर क्विक रेफरेंस। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो डिसिप्लिन के अलावा यू ऑल्सो हैव अनदर क्राइटेरिया। ऐसा ही सर, डिसिप्लिन मतलब डिपार्टमेंट के स्ट्रीम के अलावा दूसरा भी एक क्राइटेरिया है, दैट इज द percentage of the courses what you have got in your graduation। If it is the B or BTech, remember BA, BSc,
BBA only these, if you have, you are not eligible for these courses. Okay. So BCA, BA, BSc, and BBA, all these people are not eligible for PGP, C-DAC's courses. You need to be either engineering graduates or postgraduates in MSc or MCA and things like that. Okay. So for PG-DAC and mobile computing, for this course, you need to have only 50% in graduation. अभी इसमें graduation में 50% का मतलब क्या है? Whether it is aggregate or the final year, what is it? It is what, remember this clearly, it is what your university consider. आपका university क्या consider करता है? Final year आपका university consider करता है for declaring what percentage you have, final percentage you have got, we'll take it up. Or if your university is considering the aggregate, you will consider that. Okay. So 50% अगर है तो आपको 52% है, आप कंप्यूटर साइंस फील्ड का है तो you can take DAC. If you have 52%, 51%, if you are from mechanical engineering, you can take the DAC or DMC courses. And then you have 55% वाला है, 9 courses are there. 55% के लिए ज्यादा courses है इसमें. You can take this 60% के लिए 3 courses है. That means you need to have 60% mark in artificial intelligence, blockchain, as well as the cyber security and forensic courses. तो उसके लिए 60% चाहिए रहता है. ठीक है. Take screenshots of this. It will be very helpful for you. Move on to the next slide, please. तो इसमें क्या क्या कोर्सेस हम लोग ऑफर कर रहे हैं, क्या क्या मोड में ऑफर कर रहे हैं, ये आपको इसमें बता रहे हैं. सो वी हैव कोर्सेस दैट आर, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ कोर्सेस. इफ यू डिवाइड, कैटेगरी 2 और 3 बताया मैंने, वो 12 कोर्सेस है. कैटेगरी 2 में, 3 में 2 कोर्सेस है. दिस इज अनदर डिविजन ऑफ द कोर्सेस. लाइक कोर्स कौन सा मोड पे चल रहा है, ऑनलाइन मोड पे चल रहा है कि फिजिकल मोड में चल रहा है. सो दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड ओवर हियर. दीज कोर्सेस, take it in the online mode. The course that is offered only in online mode, there is only one course. That is the cyber security and forensics, which is offered at C-DAC Thiruvananthapuram. So that course is only offered at online mode. So online mode का मतलब क्या रहता है? So what is the meaning of the online mode? So understand this very clearly. In the online mode, you can attend the courses, the lectures, and the lab exams, internal assessments, aptitude, communication, project work. All these can be done from your home. You don't have to travel to the training centers, or you don't have to attend any of the physical classes for that project. Everything can be done in the online mode. If it is an online course, you can do it from your home itself. You have to have your laptop. From laptop, mostly this is done in Zoom or WebEx or somewhere. You can start that, and this will be completely monitored by the centers, and they will make sure that it is as effectively it is offered like any other physical course. जैसा कि throughout they will see that you are attending the classes properly, continuous monitoring will be there. आपका progress check करेंगे, जैसा है कि physical classes में चल रहा है उसके जैसा ही online classes में भी चलेगा. हाँ, इसमें एक चीज है, आपको फाइनल एग्जाम के लिए आपको नियरेस्ट टेस्ट सिटी में जाना पड़ेगा जो फाइनल एग्जाम के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल, आई गिव एन एग्जांपल, somebody who is from this one, from Nasik, he wants to do a cyber security course, and that is offered only at Thiruvananthapuram. So you can do that course online mode, and for the final exam, you can go to C-DAC center is there in Nasik. You can go to Nasik center and give the final exam. So you don't have to go to the C-DAC center where you are taking admission if it is in online mode. ठीक है? This is about online mode. Further questions तो आप पूछ लीजिए. We'll after the session, after my talk, I will talk about that. Okay. Now move on to the some courses are run in online में भी चल रहा है, फिजिकल में भी चल रहा है. 3 कोर्सेस है ऐसा. DAC है, DBDA है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये 3 कोर्सेस है. Some centers we are running it in online mode, some centers in physical mode. फिजिकल मोड में जो चल रहा है, मतलब everything will be there in physical mode. That means classes, exams, and your communication session, project, final exams, everything. Final exam सबके लिए physical mode है, but इनके लिए physical mode में अपना अपना center में चलेगा. So these are the physical mode means everything is done in the physically at the training centers where you are taking admission. We have a set of
around 9 courses that are run in physical mode here, and 10 courses are there that are run in physical modes. Some are run only in physical mode, like you have the HPC course, DNC, DITES, the embedded course, VLSI, all these are run in the physical mode only. Okay, and these courses, DAC, DBD, and AA, that some centers, I'll show you which centers are running in online mode, some centers are running in physical mode. Okay, so we move on to the next slide. Talk about online courses. Once again, I'm telling you, क्विक रेफरेंस के लिए ये ऑनलाइन कोर्स का और ऑफलाइन कोर्स का जो स्क्रीनशॉट लेके रखिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप जब कोर्स सेलेक्ट करते हैं काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग के टाइम, कोर्स सेलेक्ट करने के टाइम उसमें आपको दिखाई देगा वेदर इट इज एन ऑनलाइन कोर्स, ब्रैकेट में लिखा रहता है ऑनलाइन है क्या फिजिकल है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये ध्यान से देखिए, जैसा कि ऑनलाइन कोर्स, अगर इफ यू हैव डिसाइडेड टू डू ऑनलाइन कोर्स, then only choose for this one, give for preference of that. If you have decided to do physical courses, then only do the choose the courses in physical mode. एक बार चूज करने के बाद आपको सीट एलोकेट करने के बाद ऑनलाइन से फिजिकल भी चेंज नहीं कर सकता है, फिजिकल से ऑनलाइन भी चेंज नहीं कर सकता. सो द फैसला आपको अभी करना पड़ेगा 2-3 दिन में, बाई बिफोर 29th you have to decide whether you want to do which course, which mode, which center. All these details you have to do an proper R&D. Talk to the centers. Physical वाला center में बात कर लीजिए कैसा है, what are the facilities, the hostel facilities क्या है, what are the class timings, how do we, what are the advantages, वो सब उनसे पूछ लीजिए. ऑनलाइन वाला सेंटर को भी पूछ लीजिए, and then make an appropriate decision about it, what is to be done, and then fill the choices of that. Okay. And then next slide will show the centers, that is a large number, around 28 centers may have, whether we are running the physical courses. Okay, some centers में जैसा कि C-DAC पुणे है, all the courses are run in C-DAC Bangalore है, हैदराबाद है, all the courses are run in Sunbeam है, ये सब में है, all the courses are run in the physical mode. Some centers like C-DAC Mumbai, we have PG-DAC run in the online mode, and PG-DBDA big data is run in physical mode. तो some centers में online का भी course चलता है, physical का भी चलता है. some centers में only online, जैसे कि ट्रिवेंड्रम में है only online चल रहा है, and some centers में only physical चल रहा है. This one also take a screenshot and keep it with you. Move to the next one. Common campus placement, very interesting slide for all of you, because I know 90% of the students are coming here for placements. So these are the regions. We conduct the placements in 5 regions. 5 regions में placements करते हैं. So सारे across C-DAC centers in India, whether you are doing in C-DAC zone centers or authorized training centers, you will be affiliated or associated with a region. The regions are Bangalore, Hyderabad, Mumbai, Noida, Pune, in alphabetical order it is given. And उसमें कौन सा city से लोग आते हैं, कौन सा center से आते हैं, that is what is written under each city's name. Okay, so like Bangalore, you have Bangalore students, C-DAC Bangalore students, as well as C-DAC Chennai students are there. So the details are mentioned over here. So after the placements are over, after the course is over in August, you have to go to this region for the placements. I think except for Noida, where the placements are also done in the online mode, you can do it, attend the courses, the placements also in the online mode. Otherwise, all other centers, whether like for example in Mumbai, the PG-DAC course is run in C-DAC Kharghar and Juhu in online mode, but for placements you have to come to C-DAC Mumbai. Thiruvananthapuram students have to come here, Kolkata students have to come here at C-DAC Mumbai, and they have to stay here for the campus placements. So this is a pooled in campus where all the centers associated with that region are doing the placements together. Like for example, in the Pune region, all the centers of Pune as well as the other cities are there together. They will be appearing for the campus placements. Okay, so and
how do the companies shortlist for it? And they shortlist based on their own criteria. Sometimes it may be an academic criteria, how much you have scored in your engineering, or some many companies will look for your C-DAC score. So C-DAC score is very, very important thing to get shortlisted. Final exam marks are very important. The lab exam marks are very important. Everything is important. Basically, your next 6 months are going to be very crucial for you. Based on that, they will shortlist, and that process will be done. And depending on the company's interview and other process, they will select the student. Now, coming to the placement records, we have seen that in 2021 and 2022, when we had almost all the centers had achieved 100% placements. It was very good record of placements were there. And in 23, we had a slowdown in that little, the placements were a little less. But in 2024, where the placements of the March 2024 batch is going on, it has picked up now. The placements are going in an upward direction, and many companies are coming. On an average, we have across India around 300 to 400 companies visit. Almost all the big companies in India as well as abroad, they visit C-DAC's placements in almost all the regions they are there. So the placements are going in an upward direction. We have good placements in the last batch, as well as in the September 2023 batch also. We have got good placements. Okay. Any particular centers placements you want to know, you can put it in the chat once we start the chat. And the centers people, the placement officer or the course people will respond to you directly on that. I will not be answering about few asked questions on how much this center has got placement, how much that center has got placement. You can ask it in the chat. If the center people are there, they will answer those questions. Okay, move to the next slide. Yeah, so the CCAT results are out. I already congratulated all of you. 24th, you got the results which you are waiting for. So we have a very good number of students who have cleared, the candidates who have cleared CCAT. Now your stage is to give the choice filling. 24 से लेके 29 तक, मतलब आपको 2 दिन और बाकी है. 29 तक है, till midnight of 29th you will be having the choice filling. उसमें आपको choices डालना है. So this is a very crucial period, a very crucial period. Now your CCAT is over. Now next crucial period is choice filling. कैसे करने का मैं बताता हूँ, कैसे करने का उसको ध्यान से सुन लीजिए. Don't wait for the last minute. As soon as, if you have already not done the choice filling, immediately after the session, with all this knowledge that you have gained, do a R&D on the center and courses and what type of course you want, and then fill the choices by tomorrow itself. Don't wait for day after tomorrow. Day after tomorrow is the last date. Move on to the next slide. सो CCAT रैंक कैसे आया? जो कुछ लोगों का ऐसा डाउट है, मेरा एक सेक्शन में रैंक आया है, दूसरे सेक्शन में आया नहीं है. मतलब कैटेगरी 2 में आया है, कैटेगरी 3 में भी मैंने सेक्शन C दिया था, लेकिन मुझे रैंक नहीं मिला है. वो क्यों है? ये सब इसका रीजन है. द सेकेंड पॉइंट में लिखा है, यू हैव लोवेस्ट 10% कैंडिडेट्स आर डिस्क्वालिफाइड. आप जितना भी है, आप यू आर इन द लोवेस्ट 10% इन सेक्शन है, आपको डिस्क्वालीफाई किया है. सेक्शन बी का लोवेस्ट 10% में तो निकाल दिया है, सेक्शन सी का लोवेस्ट 10% में भी तो डिस्क्वालीफाई किया है. सो इफ यू हैव बीन डिस्क्वालीफाइड इन सेक्शन ए, मतलब आपको कैटेगरी 2 में भी नहीं मिलेगा, 3 में भी नहीं मिलेगा, बिकॉज सेक्शन ए में क्वालिफाई होना जरूरी है. सेक्शन कैटेगरी 2 के लिए भी, कैटेगरी 3 के लिए भी, एंड कैटेगरी 2 के लिए सेक्शन बी भी क्वालिफाई करना जरूरी है. सो यू हैव टू हैव section A and B clear to get a rank in category 2. That means अगर आपको कैटेगरी 2 में रैंक मिला, मतलब you have been qualified in both section A and section B. Congratulations, that's why you got the rank in category 2. section C में अगर क्वालिफाई हो गया तो आपको, if you have given CCAT in section C, अगर उसमें क्वालिफाई हो गया, मतलब टॉप 90% में है, तो आपको सेक्शन सी में भी, कैटेगरी 3 में भी रैंक मिला होगा. ठीक है. सो देन if you have given category 2 section A and B, and if you have qualified, you will get the category 2 rank. Section C दिया है, and if you have qualified, you will get category 3 rank also. That's what is written in the point number 1. 2 का मैंने बताया. Now what is
क्वालिफाइंग इन सेक्शन ए इज मस्ट फॉर गेटिंग सी कैट रैंक इन एनी सेक्शन, ये भी बताया मैंने। बेसिक थिंग इज सेक्शन ए में क्वालिफाई होना चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स को, जो लोग इधर आया नहीं होगा, बट उनको डाउट है, मैंने बहुत अच्छा सेक्शन बी दिया था, फिर भी मेरा कैटेगरी 2 में रैंक नहीं मिला है। क्यों है? बिकॉज यू हैव नॉट क्लियर्ड सेक्शन ए। सेक्शन बी में अच्छा मार्क्स मिला होगा, लेकिन सेक्शन ए क्लियर नहीं है। some candidates will tell that I have done very well in section A, but मेरे को section B में रैंक नहीं मिला। क्यों है? You have done well in section A, but आपने section B अच्छा नहीं किया, इसलिए डिस्क्वालीफाई हुआ है। हो सकता है, ठीक है। एंड क्वालिफाइंग इन ईच सेक्शन इज मस्ट फॉर गेटिंग सीकैट रैंक इन दैट सेक्शन। ये सब हो गया, आपको रैंक भी आ गया, तो आगे चलते हैं हम लोग क्या क्या करने का उसके बारे में सोच लेते हैं। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें अभी है, the host can see that somebody is joining here, so you can admit them, okay? या सो इसमें जैसे कि आपको अभी क्या ध्यान में रखने का है कि रैंक आया है, दैट इज काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होता है? काउंसलिंग इज नथिंग बट इट इज चॉइस फिलिंग। आप जो चूज का आपको पसंद वाला कोर्स है, आपका पसंद वाला पीजी डिप्लोमा कोर्स है, आपका पसंद वाला जो भी सेंटर है, यू हैव डन आर&डी एंड यू हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन, उसका चॉइस देने का वो प्रोसेस को, चॉइस फिलिंग को बोलता है कि काउंसलिंग, नथिंग एल्स, ओके। तो देन सीट एलोकेशन, उसमें कितना काउंसलिंग है, कितना बार काउंसलिंग कर सकते हैं, मतलब कितना बार चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, 2 बार कर सकता है। कितने बार सीट एलोकेशन होता है? 3 बार होता है। मींस फर्स्ट काउंसलिंग है जो अभी आप कर रहे हैं, फर्स्ट काउंसलिंग में 2 राउंड्स ऑफ सीट एलोकेशन है। दैट मीन्स राउंड 1 एज वेल एज राउंड 2 है, 2 राउंड का सीट एलोकेशन है। दैट इज वाई दिस time 2 days are very crucial for you to do the proper, select the proper courses and centers, online offline mode, everything you have to think and do that। तो इसके लिए फर्स्ट काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट काउंसलिंग एक बार देने के बाद 29 तक आपको जो इसमें एडिट कर सकता है, चॉइस मॉडिफाई कर सकता है। 29 के बाद वो लॉक हो जाएंगे। उसके बाद आप ये चॉइसेस को, प्रेफरेंस को चेंज नहीं कर सकता। You cannot change the order sequence of your choices, as well as you cannot add anything new after 29। तो उसके बाद चेंज नहीं कर सकता। एंड ये ऑर्डर है, सीक्वेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। दैट इज फर्स्ट काउंसलिंग में भी है। सेकंड काउंसलिंग क्या होता है? अभी अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आपको 1 और 2 राउंड का सीट एलोकेशन है, तो देन थर्ड राउंड का सीट एलोकेशन का क्या मतलब है? उसका है कि दोबारा चॉइस फिलिंग देने का एक मौका देता है। दैट इज ओनली फॉर दी वेकेंट सीट्स। वेकेंट सीट्स के लिए ही देता है सेकंड काउंसलिंग का जो दोबारा चॉइस फिलिंग है, ठीक है। ये तो एक चीज रिमेंबर कीजिए इसमें, प्लीज रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली, इज दैट अगर आपको राउंड 1 और राउंड 2 में कोई भी सीट नहीं मिला, वो राउंड 3 में भी नहीं मिलेगा। आपने चॉइस दिया है, से फॉर एग्जाम्पल आपने एक्स पुणे का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स के लिए चॉइस दिया हुआ, लेकिन आपको मिला नहीं है। राउंड 1 में भी नहीं मिला, राउंड 2 में भी नहीं मिला, ठीक है। अभी उसके बाद आपको राउंड 3 में आप अगर इसको चॉइस दिया था, सीडैक पुणे का एआई कोर्स के लिए चॉइस दिया था, फिर भी आपको राउंड 1 और राउंड 2 में मिला नहीं है, क्योंकि आपका रैंक थोड़ा नीचे था, इसलिए मिला नहीं था। तो आपको अगर नहीं मिला, तो उसमें राउंड 3 में भी कभी नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाट इज टू बी सीन। सो यू हैव टू सी दैट दिस काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर इसमें एडमिशन मिला, तो यू हैव टू टेक दैट एडमिशन। डोंट कैंसल द एडमिशन थिंकिंग दैट, क्योंकि हम लोग अभी दूसरा एक Q&A नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको ये भी बात अभी बता रहा हूँ कि डोंट कैंसल योर एडमिशन थिंकिंग दैट राउंड 3 में वेकेंट सीट के लिए आपको एडमिशन मिलेगा। ऐसा सिचुएशन नहीं होगा। इसमें अगर आपको क्वेश्चन है तो दोबारा पूछ सकता है, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग इनफ, आई हैव टू फिनिश द स्लाइड्स फर्स्ट एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन दैट। तो सीट एलोकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज रहता है, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीट एलोकेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज रहता है? 3 चीज देखते हैं इसमें। फर्स्ट चीज है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सी कैट रैंक, इसलिए सी कैट रैंक इंपॉर्टेंट है। टॉप रैंक मिलना जरूरी रहता है, इसके लिए सी कैट रैंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसका सेकंड चीज है जो
सेकेंड रैंक का बात अभी हो गया, आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट नाउ, सो डोंट वरी अबाउट इट नाउ। आप क्या कर सकते हैं इसमें, तीन पैरामीटर्स में दो पैरामीटर्स अभी भी आप कर सकते हैं, उसमें है यू यू हैव टू गिव द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ कोर्सेज एंड सेंटर्स, सोच समझ के देने का, आपको जो सबसे पसंद वाला है यू हैव टू गिव इट एज द फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस नेक्स्ट, ऐसा देना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एडमिशन के राउंड वन के बाद पूछता है कि मुझे अभी लॉक करना है, मुझे आगे नहीं जाने का, स्लाइड नहीं नहीं करने का, उसको क्या बोलते हैं, इसको कैप राउंड, ये सब आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में यूज करते हैं, ये सब इसमें नहीं रहता है, आगे बढ़ नहीं सकते, इसमें फ्रीजिंग का ऑप्शन नहीं है। अगर आपने हायर प्रेफरेंस दिया और सेकंड राउंड में आपका रैंक उसके मीट कर रहा है तो आप उसमें अपग्रेड हो जाएगा उसमें, ठीक है। एंड सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेफरेंस। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल एट द सेंटर, ओके। तो इस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा कि आप देखिएगा इसमें सिडैक पुणे में 60 सीट्स है डीएसडी के लिए, 60 सीट्स, तो टॉप 60 स्टूडेंट्स ओनली विल गेट फॉर डीएसडी कोर्स इन एक्स पुणे, so if they have given they will only get it, so the number of seats are very very important thing that is decided by us, आपको ध्यान रखने के the second वाला point। Move on to the next slide please। So this is very important slide and so what is to be taken care at this choice filling का time है, because ये तो आप अभी कर रहे हैं, तो अभी क्या ध्यान में रखने का, which course center you want to join, number one, first one, डू एन आर एन डी, जितना भी आप जैसा है कि अभी जो डिसाइड कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर नेक्स्ट 6 मंथ्स का कोर्स, उसके बाद आपका प्लेसमेंट इसके ऊपर डिसाइड करता है, एंड आपका जो लाइफ है प्रोफेशनल लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन दिस दिस कोर्स एंड द प्लेसमेंट दैट इज गोइंग टू कम इन द सब्सिक्वेंट आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ दैट इज वाई ये जो थी 2-3 दिन है बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए, सबसे क्रूशियल टाइम है, तो आपको अभी ये जो डिसीजन आप कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इसके लिए आप टाइम स्पेंड कीजिए, जितना भी आपको यू वांट टू विजिट द सेंटर्स, इवन इफ यू हैव टू ओवरनाइट ट्रैवल करके अगर एक सेंटर में जाके उनको देखने का वो कैसे है, कोर्सेज क्या है, बात करने का, स्टूडेंट से बात करना है, अलुमनाई से बात करना है, ये सारे चीज कर लीजिए, सोशल मीडिया पे भी आप डिस्कस कीजिए, लेकिन द बेस्ट थिंग विल बी टू कॉल अप द सेंटर्स एंड विजिट द सेंटर्स, दैट विल बी देयर। स्ट्रिक्टली फॉलो योर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ कोर्स सेंटर्स, ये मैंने बहुत बार बोल चुका है, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान ध्यान में रखिए, एंड गिव एज मेनी चॉइसेस ऑफ कोर्सेज सेंटर्स, आप अराउंड 60-70 चॉइस दे सकते हैं, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दिट इज फ्री, नो नीड ऑफ पेइंग एनीथिंग, चॉइस फिलिंग के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, यू कैन डू दैट, बट ध्यान में रखिए सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, एलिजिबिलिटी इन द सेंस ऑफ द ब्रांच एज वेल एज द परसेंटेज, दोनों मीट होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, सो यू हैव गिवन इट ड्यूरिंग सीकैट का रजिस्ट्रेशन के टाइम, मेक श्योर दैट यू हैव एंटर्ड एवरीथिंग इज करेक्ट ओनली, ओके। डू नॉट फॉरगेट टू सेव योर प्रेफरेंसेस, आपका प्रेफरेंस कम से कम एक बार तो सेव करना चाहिए, सेव करके रखिए व्हाइल डूइंग द चॉइस फिलिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, कोर्स का फीस क्या है, इसमें वी मूव ऑन टू दी कोर्स फी, द डिटेल्स आर गिवन देयर in the admission booklet, so this I just want to see that this course fee what you are putting is actually the investment for your best investment for your future, that is what first we have given the online course fees, online course fees है कंपेयर टू द फिजिकल कोर्स फीस थोड़ा कम है, क्योंकि आप अगर घर पे बैठ के जो कोर्स कर रहे हैं लैब फैसिलिटीज यूज नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज की वजह से थोड़ा ऑनलाइन कोर्स का फीस कम है, लाइक फॉर एग्जांपल डैक अगर ऑनलाइन कर रहा है तो 76,500 है, वो फिजिकल के लिए 90,000 है, हर एक कोर्स के लिए एडवांटेजेस है, ऑनलाइन भी अच्छा है, फिजिकल भी अच्छा है, यू सी व्हाट यू वांट टू डू इट एंड टेक इट अप, ओके। डीबीडीए का कोर्स फी थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू दी अदर कोर्सेज, सो दैट इज मेंशन्ड हियर, फिजिकल में एक है, ऑनलाइन में भी लिखा है, एंड ए का कोर्स फी भी लिखा है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, एंड मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज व्हाट आर रनिंग अंडर फिजिकल कोर्सेज दैट आर with the fees of 90,000. We have a specialized course that is unmanned aircraft system programming that is run at multiple centers, C-DAC centers में ही है भी है, और नीलिट करके जो मिनिस्ट्री का दूसरा सेंटर्स में भी है चला रहा है, उसका फीस इज 50,000 ओनली प्लस जीएसटी
GST. These are all physical courses. You can, if you are interested, you can join that also. All the fees are mentioned over here. Okay, these are all. There are loan facilities. Everything is available C-DAC के लिए. Banks, Bank of India है, and दूसरा भी एक एक्सिस बैंक है, ये पर्टिकुलरली लोन देता है. एंड अपना विद्या लक्ष्मी पोर्टल में भी ये लोन के बारे में, C-DAC students will easily get loan. In case any problem is there for you for loan, you can connect the center where you have got the admission. Second round के बाद, सीट एलोकेशन के बाद लोन का चालू होगा. ठीक है, just mentioning this here because we do not have any session afterwards. Move on to the next slide. Yeah, course fee has to be paid in 2 installments. Okay, 2 installments में pay करने का. तो there are two installments where first installment has to be paid by that is 10,000 plus GST has to be paid. Everyone, whether it is your course fees 1.5 lakhs or 76,500, you have to pay this 10,000 plus GST as the first installment. When to pay this? अभी आपको 29 को चॉइस फिलिंग के बाद 31 को सीट एलोकेशन मिलेगा. सीट एलोकेशन पब्लिश होगा 31 को. ऑन दैट डे इटसेल्फ वी विल बी स्टार्टिंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. कोर्स फी का ऑप्शन चालू होगा. ऑनलाइन है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, एंड यू ऑल्सो हैव दी other facilities are also then mentioned over there. You can do that, and you also have the second installment. The remaining fees have to be paid by 21st February. There are multiple options apart from this what is mentioned over there. We also have the UPI payment is there, and you also have the credit card and debit card also for the second installment payment. Okay, and then move on to the education loan, which I have already told you. This is also available for all the courses after round 2. This will be available on the internet itself. Move on to the next slide. Next slide, please. Yeah, so this is the right time to take the decision for the course and join this particular course. If you have done the choice filling, start preparing. 1 month you have. We are starting the course on 25th of February, so almost 1 month is there. Start preparing now itself. Your every day is a good day to learn. Your preparation, early preparation is always good for you to excel in your placement. Placement में अच्छा करने के लिए अभी से prepare करते रहो. Don't waste even a single day's time for your preparation for particular course. You can search on the website or contact your centers, any center. They'll guide you what to prepare at what stage. They will let you know. Okay, on to the next slide. What are the important dates to decide? And I'll talk about briefly about these important slides, and with that we'll end the session. Okay, we are almost 4:05. Okay, so what are the important dates you need to remember? इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो. अनाउंसमेंट ऑफ C-CAT रैंक्स ऑलरेडी हो गया है 24th January को, and then you have the online selection of the courses that is running now, and 3 days over now. 3 days day after tomorrow it is going to close the choice filling, and इसके बाद the first round seat allocation will be there on 31st January 2025. First round seat allocation will be there. What is important in that? You have to, after round 1, you have to fill your payment, the fees you have to pay. First installment 11,800 including GST has to be paid after the results are announced, and if a seat is allocated to you. Move to the next one. Sorry, previous slide please. Yeah, so you have इसका last date है, 1 हफ्ता है. The first installment का choice fill करने के लिए 6 February तक है. Remember, it is only till 5 p.m. Okay, so don't wait for the last minute. It is only till 5 p.m. and 6 February तक है. उसके बाद आपने जो first चॉइस फिलिंग दिया है, जो अभी जो दे रहा है, उसके हिसाब से राउंड 2 सीट एलोकेशन है. राउंड 2 सीट एलोकेशन है, दैट विल बी देयर. वी विल बी डू, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. हम लोग अनाउंस करेंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट इज जनरेटेड, बिकॉज सम कैंडिडेट्स माइट हैव नॉट पेड. सीट एलोकेशन करता है 8 फरवरी को करता है. ठीक है, उसका भी अगर आपने पे नहीं किया तो फर्स्ट राउंड में पे नहीं किया तो न्यूली एलोकेटेड कैंडिडेट्स है, तो उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने का 12 फरवरी तक है उसका डेट. मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. देन यू हैव इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन से सेंटर्स में
वैकेंसी है, वो वैकेंसी अनाउंस करके हमने एक दूसरा सेकंड काउंसलिंग, द सेकंड चॉइस विलिंग होगा 13 to 18 फरवरी को। उसके लिए आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा 11,800 you will have to pay. And if you get admission, that will be considered as your first installment. And if you do not get admission with that, you will be getting full refund of that one. So don't have to worry about the money part of it. It is only a caution deposit with that. So okay, that will happen on the 13th to 18th February. And uska seat allocation very next day will publish on 19th February. And उसके बाद all these round का लोग round 1 round 2 सबको second इंस्टॉलमेंट का लास्ट डेट है 21 फरवरी 2025 को है। एंड उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है 24 फरवरी को। फिजिकल स्टूडेंट्स कैन गो टू द फिजिकल सेंटर्स, सम ऑफ द फिजिकल सेंटर्स ऑल्सो गिव ऑनलाइन फैसिलिटीज टू गिव द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है रजिस्टर करने के लिए, एंड मार्कशीट्स, फोटोग्राफ्स, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी अपलोडेड और सबमिटेड एट द पर्टिकुलर सेंटर। ओके, उसके बाद 25 फरवरी को आपका कोर्स चालू होता है। सम सेंटर्स में बी हैविंग इवन द preparation classes 1 week before also, they may be having it. They will let you know if they are conducting it. Okay, and the course will definitely end on 11th August, and इसका placement भी चालू होगा 10 दिन के बाद। As of now we have decided the date on 21st August को placement start होगा। That means exactly 6 months from now, if you have joined the course and if you are doing really very well, you may be placed in a very good company exactly 6 months from now. Okay, move on to the next slide. So you need to go that extra mile. Join the PG Diploma courses February 2025 batch. Do not wait for the next batch. Whatever rank you have got, take admission wherever you are getting. Every C-DAC center is controlled by the centralized body. Quality control is done, it is maintained. So you will get the similar quality at all the centers, and placements are done centralized at the regions. So you will get equal chances at all the centers, but depending on your eligibility in terms of your academic qualifications and C-CAT ranks. So if you have got a C-CAT rank, don't bother about where you are getting admission. If you have decided the course, go for the course and take admission wherever you are getting. Give maximum number of choices in the choice filling type. Anas, please go to the previous slide. I just would like to highlight on the next previous one. इसमें एक दो चीज मैंने स्लाइड में लिखा नहीं है, इसलिए आपको बताता हूं। उसमें जो फोर्थ वन जो पॉइंट सॉरी थर्ड वन, डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन योर चॉइस विलिंग, you whether you are allocated a seat or not will be declared in that. Okay, इसमें क्या होता है, कुछ कुछ कैंडिडेट्स को रैंक नहीं, रिक्वायर्ड रैंक नहीं होगा, इसलिए उनको उसमें सीट्स में नॉट बी अलोकेटेड इन दैट कैंडिडेट्स। तो जिसको आपको राउंड 1 में अगर अलोकेट नहीं है तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने का जरूरत नहीं है। इफ यू हैव बीन अलोकेटेड अ सीट ओनली, यू हैव टू पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर सीट अलोकेट किया तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना 100% जरूरी है। प्लीज रिमेंबर दैट, अदरवाइज your seat will be cancelled. Okay, now see that you have given 3 options and आपको जो और 5 ऑप्शन दिया है, आपको थर्ड ऑप्शन मिला है, but you still wanted to go for the first or second option. But first round में आपको थर्ड ऑप्शन मिला है, please make the payment, then only you will be considered for the round 2. Round 2 के लिए then only you will be considered. If you do not make the payment, if even after getting the seat allocated in round 1, you will not be considered for round 2. Okay, similarly if you अगर आपको कोई भी सीट allocate नहीं है round 1 में, तो आपको कुछ पे नहीं करने का, आप you will be automatically considered for round 2. If you have a rank, enough rank, you will also get a seat allocated in round 2 for the first time. पहले बार round 2 में allocate होगा उनके लिए the last रो में जो लिखा है first installment पे करने का। ठीक है, so do not wait for anything. If you have done the R&D, if you have decided the course, and if you have got the center, bindas join करो course के लिए। Move to the next slide please. So all the best wishes, dream big, and I'm sure you will achieve all your dreams. Start your preparations
for the placements. भी से prepare करना शुरू कीजिए. Once again, best wishes to all of you, and we'll start the Q&A session now. Some ground rules for the Q&A. You need to have you have to put on your mic, and if possible, video भी चालू कर दीजिए. आपका नाम सही नाम डाल दीजिए, so that we'll come to know that who's the person. Not like Galaxy nothing or iPhone and all, वो सब नाम नहीं चाहिए. अपना नाम डाल दीजिए. ऐसा है कि दूसरा फिल्म स्टार्स का नाम मत डालिए और कुछ ABCD वगैरह मत डालिए. This is important to have an impact with your faculty, your placement coordinator and everything. So that's very, very important. Thanks for your attention, and